And I have shared the screen also. I have made your folder 82nd batch. And I'm opening this in a new project. I mean, I'm creating a new project. Open a folder. Go to training. 82nd batch. I opened it. Right? I have a folder where I'm creating a new project. So terminal open करते हैं. New terminal. So how to create a new project in Angular? Team. Command to create a new project in Angular. ng. Not new. ng तो पहले new. CMD लिखिए. ng new. और फिर folder ng name. new. तो folder name नहीं, application name. So what I will do is I say ng new followed by the project name. Let's say my project name is basic component. Okay, this is the project name, right? So why it is throwing in error? Because I have opened a PowerShell. So what I can do is instead of PowerShell, I can use git bash, I can use command prompt, right? So if something like this error comes, please say scmd means I'm shifted to command prompt. CLS clear screen. Say ng new basic. So it says, do you want to add a routing? I say no. CSS, yes, let this start. So new project is getting created. सर मैं जब ये इंस्टॉल कर रहा हूँ सर ये मेरा इंस्टॉलिंग पैकेजेस पे रुक जा रहा है. क्या हो रहा है? What is happening? npm की प्रोसेस रुक जा रही है सर, इंस्टॉलिंग पैकेजेस पे रुक जा रहा है. हाँ तो अगर रुक जाता है तो दोबारा से npm i कर दो, npm install. नो प्रॉब्लम. कुछ लोगों का हैंग हो जाता है. दोबारा कैसे? npm install टाइप कमांड टाइप करो. बताता हूँ 2 मिनट को. ठीक है सर. इसको होने दो. सो ठीक है, दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट में बताता हूँ. तो तुम्हें कभी भी तुम्हें लगता है नोड मॉडल फोल्डर अगर ढंग से इंस्टॉल नहीं हुए, if you think right, if you find that your node model folder is not installed properly, again you type this command npm I or install कुछ भी. So what it will do, it will install all the packages, node model packages again. Okay, not node model packages, sorry. The npm node package manager will install all the packages that are given in your package.json. Remember package.json बताया था? Package.json याद है? जिसमें सारी डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी होती हैं. ये npm इंस्टॉल कमांड उनको दोबारा से इंस्टॉल कर देगा. Yeah, let this install. Whew. So last time what did I tell you is that we will create a new component और उस नए component में हम सब actions perform करेंगे. Correct? I guess last time मैंने कोई भी coding नहीं कराई थी, right? मैंने last time भी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रन करके दिखाया था एप्लीकेशन को. And I showed you कौन सी चीज क्या करती है. What is component, what is module. Am I right? याद है what is component, what is module?
Yes, तो sir. क्विकली कैन यू जस्ट टेल मी कि कंपोनेंट क्या है? बोलो बोलो। सर कंपोनेंट जो भी एंगुलर के अंदर हमें रिक्वायर्ड होता है अपने प्रोजेक्ट पे। क्या रिक्वायर होता है एंगुलर के अंदर? एंगुलर के अंदर तो प्रोजेक्ट में बहुत कुछ रिक्वायर होता है। सर So what जैसे exactly is component? सर ऑल डिपेंडेंसी एंड देयर डिपेंडेंसीज, No, HTML फाइल। no. Dheeraj, you is it Dheeraj who's speaking or Deepak who's speaking? सर दीपक। Okay, Dheeraj, what about you? What you were trying to say? सर जैसे कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ कोड वेयर वी सर जहां हम अपने टास्क को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब सर जहां अपना लॉजिक लिखते हैं, व्हिच वी पुट आवर लॉजिक। Close, but not the exact answer. Okay. Anyone else? और कोई? Component is a fundamental unit of programming in Angular. If you have any functionality, correct, that means you should be having a component for it. So जैसे login page है, तो login page एक login component है basically. Registration page, right? Registration functionality, registration component है. Component का composition क्या होता है? Component contain तो HTML CSS कोड बिहाइंड द फाइल। what is the code behind file extension? सर ऑल क्लासेस। Yes, sir. Correct, TS files और ultimately क्या होता है? Classes होती हैं, class. ठीक है? यस सर। Code behind Yes, sir. file is your TypeScript file, correct, where your class is written. समझे? यस सर। Clear है? Okay, good. So again, long story short, तुम्हारा component क्या है? It's a fundamental unit of programming in Angular. Wherever you have a functionality, which means you will be having a component. तो अगर एक होम पेज, तुम लोगों ने लास्ट टाइम वो एक ई कॉमर्स पेज डिसाइड किया था ना, ई कॉमर्स पेज बनाया था, याद है? यस Yes, Yes, sir. कैसे नो? Yes, sir. Yes, sir. Let me just open that. शॉप है या कुछ ये बनाया था तुमने, राइट? तो इसमें बता सकते हो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसमें? क्या क्या एज अ कंपोनेंट हो सकता है इसमें? और कंपोनेंट के बारे में हमने और क्या पढ़ा था कि कंपोनेंट इज बेसिकली अ कॉम्पोजिशन ऑफ HTML एंड कोड बिहाइंड फाइल, मतलब टेम्पलेट एंड क्लास, करेक्ट? जो तुम्हारी कोड बिहाइंड फाइल है वो क्लास फाइल है बेसिकली, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो क्लास फाइल होगी। उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? TS, टाइपस्क्रिप्ट। वो एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, करेक्ट, जो क्लास होगी, राइट, जो क्लास होती है वो एक TS फाइल है, करेक्ट। और TS में क्या लिखा होता है? हमने क्लास लिखी होती है। तो हमारी कोड बिहाइंड फाइल एक क्लास फाइल होती है, जैसे डॉट जावा फाइल होती है, जैसे डॉट TS फाइल होती है। डॉट जावा फाइल क्या होती है? आपकी क्लास ही होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। सिमिलरली डॉट TS फाइल क्या होती है? तुम्हारी क्लास ही होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और HTML होता है, राइट, और स्टाइलिंग करने के लिए CSS होती है। ये तीन चीजें तो मस्ट है, होती ही होती हैं। तब तुम अगर मुझे यहाँ बताओ तो तुम्हें कितने कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं इस पेज पे? पहला तो सर हेडर कंपोनेंट। मेरे पास बहुत कम है धीरज। सर फर्स्ट है सर सर हेडर एक तो लॉगिन है। ठीक है, और लॉगिन Login, sir. Header. शॉप नाउ, माय अकाउंट माय अकाउंट, ओके माय गुड। कार्ड। यस एंड वी हैव अनदर वन सर, वन लाइक से स्टोर भी हो सकता है क्योंकि The जहाँ e-shop अपने logo. मतलब प्रोडक्ट्स को जहाँ डालेंगे। करेक्ट, स्टोर भी आपका एक कंपोनेंट है। ई शॉप Yes, sir. लोगो इज नॉट अ कंपोनेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हेडर एक कंपोनेंट है, मेन्यू एक कंपोनेंट है, बैनर एक कंपोनेंट है। और आगे चलें, ये जो लॉबी तुमने बनाई है, ये क्या बोलेंगे अपने प्रोडक्ट्स करके जो लॉबी है हमारी, जिसमें न्यू कलेक्शन न्यू कलेक्शन न्यू कलेक्शन लिखा हुआ है, ये एक कंपोनेंट है, करेक्ट। डील्स ऑफ द डे एक कंपोनेंट है, राइट? Yes, sir. समझे?
ये जो सेक्शन है हॉट डील वाला, ये एक कंपोनेंट है हॉट डील। लेटेस्ट प्रोडक्ट एक कंपोनेंट है, is a picked for you पिक्ड फॉर यू एक कंपोनेंट है, राइट? and then footer करेक्ट, फुटर Last फुटर footer. भी एक कंपोनेंट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। yes sir. गुड। तो अभी क्या हम अपने प्रोजेक्ट में हैं इस टाइम पर? आर वी इन अवर प्रोजेक्ट? तो मेरी डायरेक्टरी ठीक है, क्या हम अपने प्रोजेक्ट में हैं? टीम no sir Yes. सो हमारा No, प्रोजेक्ट sir. क्या है? बेसिक कंपोनेंट। तो हम करते हैं सीडी और नाउ वी आर इन अवर कंपोनेंट, ठीक है? नाउ वी आर इन अवर प्रोजेक्ट, ओके? अगेन सेम ओल्ड स्टोरी, अपने प्रोजेक्ट में जाओगे तुम्हें ऐप फोल्डर मिलेगा, ऐप फोल्डर में तुमको HTML मिलेगा, राइट? करेक्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, हटा दो इसे, नहीं चाहिए मेरे को, राइट? इसको H1 डाल दो। वेलकम टू ई शॉप पे, ओके? तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, नया कंपोनेंट ऐड करता हूँ। आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू कंपोनेंट। आई से ng means angular, hey angular, generate angular, generate what? Generate component। कंपोनेंट का नाम क्या रखना है? लेट्स से कंपोनेंट का नाम हम रखते हैं मेन्यू, ओके? मेन्यू, व्हाट इज इट? मेन्यू। दो मिनट रुको। अगर इस मेन्यू ठीक रहेगा। और नेव, सो ng जनरेट कंपोनेंट, करेक्ट? कंपोनेंट का नाम मेन्यू। तो उसने क्या किया, तुम देखो, उसने एक मेन्यू कंपोनेंट बना दिया। डिड यू सी दैट टीम? yes उसने एक yes sir. मेन्यू कंपोनेंट बना दिया। और क्या किया, उसके अंदर नेसेसरी फाइल से वो डाल दी, टीएस फाइल डाल दी, component.ts, करेक्ट? जो कि क्लास फाइल है, कोड बिहाइंड फाइल है। एक CSS फाइल डाल दी और एक स्पेक फाइल डाल दी। स्पेक मतलब यूनिट टेस्टिंग के लिए। क्या होती है यूनिट टेस्टिंग? अभी अभी जानने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। HTML फाइल डाल दी। और एक और काम किया उसने, उसने अपडेट कर दिया ऐप मॉड्यूल फाइल को। एनी आइडिया उसने क्यों किया होगा ऐसा? ऐप मॉड्यूल फाइल में चलते हैं। नाउ यू गाइज नो, नाउ करेक्ट, इसलिए बोला था कि लास्ट रिकॉर्डिंग को प्लीज ढंग से देखना। लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने तुमको ये भी एक्सप्लेन किया है कि मॉड्यूल क्या होता है। ये सुनो, Yes sir. किया है कि नहीं किया? तो अब तुम देखो, तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, एक ऐप कंपोनेंट जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट था, और एक मेन्यू कंपोनेंट जो तुमने बनाया। दोनों यहाँ पर आ गए डिक्लेरेशन में, करेक्ट? तो Yes, तुम sir. तुम कोई भी कंपोनेंट ऐड करो, वो बाय डिफॉल्ट जो है इस ऐप मॉड्यूल में जाके ऐड हो जाएगा। लाइक रजिस्ट्रेशन, राइट? क्यों हो जाएगा? देयर इज द रीजन बिहाइंड इट भाई। ये भी तुम्हें मैंने लास्ट टाइम बताया था, बूटस्ट्रैपिंग बताई थी लास्ट सेशन में, बूटस्ट्रैपिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग में आई हैव एक्सप्लेन यू दैट हाउ द एप्लीकेशन बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप्स, राइट? सो बूटस्ट्रैपिंग के प्रोसेस में जब ऐप मॉड्यूल फाइल लोड होती है, तो वो अपने साथ सबको लोड करती है जो भी इसका कनेक्टेड है, राइट? अगर तुम्हें मेन्यू कंपोनेंट यूज करना है तो वो ऐप मॉड्यूल में होना चाहिए, वरना वो कॉल ही नहीं होगा, वरना वो इनिशियलाइज ही नहीं होगा।
वरना वो लोड ही नहीं होगा। यस और नो? यस सर। करेक्ट, आगे चलते हैं। अब पॉइंट ये है कि लेट्स सी मेन्यू कंपोनेंट। मेन्यू कंपोनेंट में तुम जाओगे तो यहाँ पर HTML में सिंपली लिखा हुआ है पैराग्राफ मेन्यू वर्क्स एनीथिंग, जस्ट टेक्स्ट के लिखा हुआ है। अब तुम्हें ये मेन्यू कंपोनेंट यूज करना है, करेक्ट। बट पॉइंट ये है कि मेन्यू कंपोनेंट को यूज कैसे करोगे, क्योंकि ऐप कंपोनेंट तो इंडेक्स पेज में लोड होता है और यही स्टार्टअप कंपोनेंट भी है। कहाँ लिखा है ये? ऐप मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि ऐप कंपोनेंट ही स्टार्टअप कंपोनेंट है, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट है। बूटस्ट्रैप मतलब जिससे शुरुआत हो रही है, राइट टीम? तो क्या करोगे अब, कैसे करोगे बताओ? अब मेन्यू कंपोनेंट को कैसे यूज करना है या शो करना है, तो कैसे करोगे इसे यूज? सर हम जब कंपोनेंट की HTML फाइल में उसे डिक्लेयर करेंगे, मतलब फाइल को, मतलब जो हमने नहीं बना रखा है। तो आप क्या करेंगे, अपने मेन्यू कंपोनेंट में जाओ और देखो इसका सिलेक्टर क्या है, ऐप मेन्यू। इसका नाम है ऐप मेन्यू, ओके। इस ऐप मेन्यू सिलेक्टर को पकड़ो और अपने ऐप कंपोनेंट में जाओ, जो तुम्हारा स्टार्टअप कंपोनेंट है, यहाँ पर कॉल कर दो। जैसे जैसे इंडेक्स पेज पे ऐप रूट खुद कॉल हुआ है, मतलब ऐप कंपोनेंट जैसे खुद कॉल हुआ है, सिमिलरली ऐप कंपोनेंट में जाके ऐप मेन्यू कॉल कर दो। क्लियर हुआ या नहीं? ये क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है बताओ? सर ऐप कंपोनेंट में क्यों जाएंगे, मेन्यू कंपोनेंट में जाके ऐप मेन्यू कॉल करेंगे। मेन्यू कंपोनेंट में जाके ऐप मेन्यू क्यों कॉल करोगे तुम? ऐप मेन्यू के अंदर जाके मेन्यू कॉल करोगे? ये हमारा मेन्यू कंपोनेंट है, छोड़ दो इसके, ऐप हटा दो उसको, लो ये हटा दो ऐप, लो। अब ये मेन्यू कंपोनेंट, मेन्यू इसका नाम है, इस कंपोनेंट का नाम है मेन्यू, इसका सिलेक्टर नेम है मेन्यू। इसको यूज करना है, कहाँ कॉल करोगे इसे, कैसे यूज करोगे इसे? इसको तो कोई भी नहीं जानता, नोबडी नोज इट। अच्छा चलो मैं तुम्हारे C++ के दिन याद दिलाता हूँ, C++ या जावा के। तुम जितनी मर्जी क्लासेस बना लो, अगर तुमने उसको मेन मेथड के थ्रू कॉल नहीं किया। कॉल नहीं किया, यस यस। तो क्या उसकी मेमोरी एलोकेट होगी उसे? नो सर। नो सर। करेक्ट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तुम जितने मर्जी कंपोनेंट्स बना लो, अगर तुम उनको कॉल ही नहीं कर पा रहे हो तुम, तो वो यूज कैसे होंगे? तो उनको कॉल करने का तरीका क्या है? आप ऐप कंपोनेंट में जाओ, ऐप कंपोनेंट HTML में, और वहां इनको कॉल कर लो। एक और एग्जांपल दिखाता हूं तुमको मैं। ng जनरेट कंपोनेंट मेन्यू के बाद में लिखता हूं बैनर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बैनर कंपोनेंट को भी जनरेट करेगा, कर दिया। और देखो उसने क्या किया, लास्ट में अपडेट कर दिया ऐप मॉड्यूल को। चलो ऐप मॉड्यूल पे चलते हैं। इफ यू गो टू ऐप मॉड्यूल, नाउ यू हैव 3 कंपोनेंट्स, करेक्ट। लेकिन तुम्हारा स्टार्टअप कौन सा है, फेस कौन सा है, फर्स्ट पेज कौन सा है? ये तुम्हारा है ऐप कंपोनेंट। तो तुम ऐप कंपोनेंट में ही इसको कॉल करोगे। नाउ यू गो टू बैनर कंपोनेंट एंड चेक उसका नाम क्या है। ऑब्वियसली ऐप बैनर होगा, हटा दो, हमें नहीं चाहिए ऐप, ये प्रीफिक्स है, बैनर, ओनली बैनर। अब इसको यूज करना है, क्या करोगे? ऐप कंपोनेंट में जाओ, यहाँ पर लाइन ब्रेक करो BR, और बैनर ओपन क्लोज। आया समझ में या नहीं आया? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट टीम? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, इसको रन करते हैं। बोलो। सर मतलब जैसे कि जो हमारा ऐप कंपोनेंट, वो हमारा रूट कंपोनेंट आपने बोला, राइट? हाँ, तो सर जैसे कि मतलब हमारे से ई शॉप वेबसाइट है, तो हमारे जो बैंक मतलब पीछे जो भी है, मतलब बड़ा सा पेज जो है, तो वो हमारा रूट कंपोनेंट यानी कि ऐप हो गया। उसके अंदर हम डिफरेंट, मतलब सॉरी, वो ऐप कंपोनेंट हमारा रूट हो गया, रूट कंपोनेंट। तो उसके एग्जैक्टली अंदर हम लोग छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं
चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एक चंक में डिवाइड किया हमने मेनू, एक उसके चंक बाद अगला डिवाइड किया एक हमने कंपोनेंट क्या है, किया? एक चंक एक कंपोनेंट है, एक चंक एक कंपोनेंट है, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन सर हो रही एक है तरीके तो से आपने रुको 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 रुको, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ ऐप कंपोनेंट में जाओ, सर मतलब अगर तुम्हें नाम में कंफ्यूजन होती है तो इसका नाम तुम चेंज कर सकते हो। यस इसको सर ऐप रूट की जगह तुम्हें क्या करना है, इसे क्या नाम रखना चाहते हो उसका, खाली रूट भी लिखोगे या खाली यस ऐप भी छोड़ोगे तब भी चलेगा। लो, अगर तुमने इसे ऐप बना दिया है सर ये तो जहाँ कॉल कर रहे हो वहां भी ऐप यूज करो। ओके सर अब मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट ng सो ओके। सर हमारा रूट कंपोनेंट कितने भी कंपोनेंट अपने अंदर डाल सकता है, मतलब एज मेनी भी लाइक? हाँ, वो कह रहे 4200 is already in use, would you like to use a different port? I say yes, तो वो डिफरेंट पोर्ट पे मेरे प्रोजेक्ट को रन करेगा। अभी कंपाइल हो रहा है, फोन दो से या कंपाइलिंग। सो लोकल होस्ट इस पोर्ट पे प्रोजेक्ट रन कर रहा है, कॉपी कर लेते हैं इस लिंक को। फिर गो ऑन म्यूट। ये देखो, वेलकम टू ई शॉप है, मेन्यू वर्क्स, बैनर वर्क। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो तुम्हें दोनों कंपोनेंट दिखा देता हूँ, तीनों लोड हो रखे हैं। सी, menu component and banner component. Did you see that? Team, did you see that? यस यस सर। सर इस तरह से आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को चंक्स में डिवाइड, कंपोनेंट्स में डिवाइड करके काम करते हैं। ओके यस टीम, इज दैट ओके और नॉट? ओके, सो मेन्यू कंपोनेंट में चलते हैं और मेन्यू कंपोनेंट में क्या देखा है, लेट्स सी। तो मेन्यू कंपोनेंट में ये मेन्यूज हैं। ओके, मुझे ये प्रिंट कराने हैं, कैसे कराऊंगा प्रिंट में? तो ये लास्ट सेशन में हमने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग समझा था कि क्लास के अंदर, जैसे तुम्हारी रेगुलर क्लास होती है ना, जैसे तुम्हारी जावा क्लास है या सी प्लस प्लस है या करेक्ट या डॉट नेट बेस्ड क्लास है। सो इफ यू सी क्लास, द कलेक्शन, class is what? Class is a collection of attributes and behavior. Do you agree or not? यस सर। करेक्ट। तो क्लास में क्या क्या होता है? क्लास में प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट? और क्या होता है क्लास में? वेरिएबल्स। हाँ, वेरिएबल्स। प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर तुम्हारे एरे होते हैं, नहीं ऑब्जेक्ट्स होती हैं, राइट? ऑब्जेक्ट्स। क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हो, और क्या बनाते हो क्लास में?
एरे बनाते हो, इंस्टेंस क्लास में एरे होता है, क्लास में लिस्ट होती है। लिस्ट क्या होती है बेसिकली, एनी आइडिया? होती है लिस्ट? नो सर। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे क्या होता है? एरे, एरे collection of same data type. करेक्ट। कलेक्शन ऑफ सेम डाटा, यस। करेक्ट। तो ये हम क्लास में, और क्या होता है लास्ट में क्लास में? और क्या होता है? फंक्शन, मेथड्स, राइट? फंक्शन और मेथड्स सब आपकी क्लास में आता है। ओके, सो इन्हीं को ही हम जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ई शॉपिंग के केस में, ई शॉपिंग के केस में प्रॉपर्टीज हम किसको बनाए? रुको। जैसे ऊपर लोगो है, करेक्ट? ऊपर लोगो है, और क्या है? चलो लोगो से शुरू करते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, लोगो, राइट? क्या हुआ? स्ट्रिंग। डिड यू गेट माय पॉइंट? हमने हमने एक लोगो करके एक क्लास प्रॉपर्टी बनाई, करेक्ट, जो कि स्ट्रिंग टाइप है। क्या मेरा आ रहा है? ओके, तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं? अपने सारे जो क्लास प्रॉपर्टीज हैं उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है कंस्ट्रक्टर। यही काम करता है कंस्ट्रक्टर, या और कोई काम करता है कंस्ट्रक्टर? इट इनिशियलाइज द क्लास मेंबर विद द डिफॉल्ट वैल्यू, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ मैंने किया दिस डॉट लोगो, करेक्ट? क्लास नेम मैंने ये नाम डाल दिया, करेक्ट? तो एक सिंपल प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो गई। ये मैंने लास्ट क्लास सेशन में भी किया था। अब इसको प्रिंट कराना है मुझे। मुझे इसे प्रिंट कराना है। कहाँ प्रिंट कराना है? ऑब्वियसली मेन्यू में। तो यहाँ पर हम इंटरपोलेंट लगाएंगे। इंटरपोलेंट सर मीन्स आउटपुट क्या दिखाएगा? विच विल इंटरपोलेट द वेरिएबल और क्लास प्रॉपर्टी एंड गिव अस द आउटपुट। तो यहाँ मैंने पास कर दिया लोगो, करेक्ट? इसी को अच्छा डेकोरेटिव करना है तो H1 में डाल दो। Okay, not this one. Sorry, my mistake. There was a different application, different port, I mean to say. Wait a minute, wait a minute. On which port our application was running? Wait a minute. Yeah. 566, 566666. Copy. ऐसे डाल देता हूँ। 566. Okay.
No. 4 times 6. 4 times 6 only. This should work. See, eShop. This is coming from this is coming dynamically from the component. Correct? It's a property. It's coming dynamically from the component. Clear है? या नहीं? Clear है या नहीं? Practical or simple example पे बताऊंगा so that you'll understand what exactly we are doing, right? So we are binding the property from our TS file, I mean class file, code behind file to HTML. We call this process property binding. What we call? What we call? Property binding. Property binding. So, right? Okay. So now I wanted to, let's say, wanted to create a object. So in class we create object, correct? Objects are what? Objects are group of different type of data types. Yes or no? Yes, Do you sir. know, first of all, what is object team? Do you, I mean, Yes, all of sir. you know about object? Yes, It's sir. a collection Yes, of sir. different type of data type, Yes, sir. right? So let's try that. Let's create an object. So I say, where we can fit it. Okay. Okay, let me try something here. So here I would say menu. Okay. Menu is one object. In menu, what we're doing is not menu. Let me take some real-time example. Say product. Although it should be part of product component. So let's say I took product. It is any type. Why it is any type? Any idea? So it can be numeric, it can be string type. But why? Why any? Collection of a different type of data values. Okay. Long story short, we don't know the type of it. We don't know what type of value it will contain. So we put any. Okay. We put any. Now again in the constructor, all this whatever I'm hard coding, they should come from API, and it will come from API. I'm initializing the product with the default value, say ID of the product. What next? Name. Name of the product. I say t-shirt. Okay, let's say 3 is good enough. So this is product object. This is product object. Now I wanted to print it. So what we call it? Again, property binding.
here I will okay, we'll print in table. So table has tr has td. So in one td I'm saying id. In the second So what td is I'm data? saying curly braces. Tr means table row. You did not attend any UX session. Tr means table row and then td. So what is the name of our object? What is the name of our project? Our object? Can Reset. Huh? T-shirt. What is the name of our object? Reset. The product. 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 Right? So I should say product. Shall I say product? Or I say product, see what is going to happen. See? Object. Why? Because product is an object. Dot id. Agree or not? Guys, agree or not? yes. Yes, sir. Second is name of the product. One more row. 2 columns inside that. TD. Now I say cost. Bolo. Tell me. Product. Dot. Product dot cost. Cost. Agree? Cost. This is all what? This is all property binding. Why? We have properties of a class, correct? And we are binding them in HTML. This is called property binding. Let's see. Is it printing or not? Yes, it is printing. Right? It is printing. Team, you understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Do you all agree and do you all understood or not? Every one of you. Understood, sir. Huh? Hello? Understood, Yes, sir. sir. Good. So far what I've showed you is the example of, multiple components and what is there in your class. I showed you till object. So array and list is the one which is pending, which I will take in the next session. But let's jump on events, methods. So there are two sort of binding. One is property binding, which means you have class properties in the form of array, list, object, property, and you're binding it to HTML. That is called property binding. From class to HTML is property binding. From class, correct? From class to HTML is property binding. Now, what is, how you will be binding your functions and methods. Let's see some function. Let's create some function. Let me have one function. Say get product.
Just like you used to write a function in your C, C++, Java, PHP, same way. Get product, it's a function. So what kind of function it is? Public function. Do you all know what is public, private, protected? Yes, sir. You all know public and Yes. private? You all Yes. of. Yes, sir. Yes. Anyone who says no? Yes, sir. Okay. Still, for your understanding, let me just tell you, public means it can be called outside of this class. Private means it cannot be called outside the body of class. Okay, sir. Okay. Okay, sir. So now here I'm simply putting alert. Simply putting alert. So after this high, now the point is this function is created, but this function is not hooked with HTML. So let's go to HTML. And now you tell me if you want, if you want any function to be hooked, तुम लोगों को क्या चाहिए बेसिकली HTML में? कैसे hook करोगे? क्या करोगे? कैसे करोगे? मैं क्या करता हूँ? बटन डालता हूँ. बटन, राइट? सिंपल बटन. और बटन में यहां पर हम उस फंक्शन को हुक करते हैं. मैं इसको ना 2 विंडोज में करता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. मैंने यहां पर एक फंक्शन कॉल किया, एक डायरेक्टिव कॉल किया. अब तुम पूछोगे डायरेक्टिव क्या होता है. सो विल गो स्टेप बाय स्टेप. दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू रिवील एवरीथिंग इन द सेम सेशन. क्लिक equals to get product. Okay, see this. सबसे पहले ये जो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये क्लिक क्या है. What is this click? Click is basically a directive. Click is a directive. Now next question is what is directive? So directive is a ready-made, or you can say inbuilt functionality. Inbuilt functionality. Directive is inbuilt functionality, right? Which or I should say, directive is inbuilt functionality which we inject in HTML or element. For example, अभी जो click है, click एक डायरेक्टिव है और हर डायरेक्टिव जो होता है वो एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होता है. तो तुम्हारे हिसाब से क्लिक डायरेक्टिव में क्या इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होगी? जो क्लिक डायरेक्टिव तुम्हें दिख रहा है उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी होगी? उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? एनी आइडिया? सर प्रोडक्ट की डिटेल्स आ सके सर हमारे पास. नहीं मैं ऐसे नहीं पूछ रहा. मैं पूछ रहा हूँ जो क्लिक डायरेक्टिव है इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? तुम्हें क्या फंक्शनैलिटी दिख रही है इसकी? कॉल करेगा ये. तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है. सर एक क्लिक फंक्शनैलिटी सर कॉल करेगा, मतलब हम करेक्ट. जो उसके अंदर इसकी क्या फंक्शनैलिटी है? क्लिक फंक्शनैलिटी. जो क्लिक डायरेक्टिव है ये क्लिक फंक्शनैलिटी इंजेक्ट कर रहा है.
क्लिक डायरेक्टिव जो है वो क्लिक फंक्शनलिटी इंजेक्ट कर रहा है एलिमेंट में। कौन से एलिमेंट में? बटन एलिमेंट में। अंडरस्टूड और नो? क्लिक Yes, sir. डायरेक्टिव Yes, sir. is injecting on click functionality in button, राइट? तो अब जब तुम बटन पे क्लिक करोगे तो ये क्लिक फंक्शनलिटी इट विल इंजेक्ट द क्लिक फंक्शनलिटी। और तुम क्या कर रहे हो उस टाइम पे? जब ये क्लिक फंक्शनलिटी इन्वोक होगी तो तुम उसमें अपना गेट प्रोडक्ट फंक्शन को मैप कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इवेंट बाइंडिंग। तुम्हारे पास क्लिक इवेंट है। व्हाट इज योर इवेंट? क्लिक इवेंट, राइट? तुम्हारा इवेंट क्या है? क्लिक इवेंट है। फंक्शनलिटी क्या है? क्लिक फंक्शनलिटी है, राइट? इसको तुम किसके साथ हुक कर रहे हो? जो क्लास में तुमने मेथड बनाया है, क्लास में तुमने जो फंक्शन बनाया है, राइट? उससे हुक कर रहे हो। तो इसी को हम बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? कि तुमने एक इवेंट पे Event binding. तुमने एक इवेंट पे एक फंक्शनलिटी पे तुमने एक इवेंट पे तुमने एक फंक्शन बाइंड कर दिया, तो इवेंट बाइंडिंग। तुमने क्लिक इवेंट पे या किसी भी इवेंट पे तुमने फंक्शन बाइंड कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग, कि वी हैव बाइंडेड द इवेंट। यहां तक सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है टीम? यहां Yes, sir. तक सबको क्लियर है या नहीं है? एवरी वन ऑफ यू, नॉट अ सिंगल वन। एक दो की बात नहीं कर रहा, मेरे को सबको सबसे पूछना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। ओके ओके। सर ये menu.ts में हाँ सर, इसमें जहाँ आपने गेट प्रोडक्ट को सर वहाँ जो फंक्शन कॉल मतलब जो फंक्शन बनाया है सर आपने गेट प्रोडक्ट, तो सर ये फंक्शन मतलब ये हमारा मतलब यहाँ नीचे ही बनेगा या ऊपर भी बना सकते हैं हम इसे कंस्ट्रक्टर के ऊपर? नहीं, जहाँ आपने कंस्ट्रक्टर के और बाद जहाँ पे वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के बाद कहीं बना सकते हैं। मतलब यहाँ नहीं बन सकता जहाँ आपने एक्सपोर्ट कर रखे हैं क्लासेस? नहीं नहीं, आपके क्लास में नहीं, बनेगा ना, ये क्लास में बनेगा। ये क्या है? क्लास है ये। क्लास का पहला फंक्शन कौन होता है? कंस्ट्रक्टर होता है। उसके बाद यस कहीं सर, बना लो। ओके। यस सर, यस तो सर, व्हाट डिड वी सी? वी सॉ अ इवेंट बाइंडिंग। तो तुमने क्लिक इवेंट पर तुमने अपना फंक्शन जो है बाइंड कर दिया, हेंस यू अचीव इवेंट बाइंडिंग। अब लेट्स सी कि जब मैं क्लिक करूंगा बटन पे तो क्या होगा? ये अलर्ट आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। व्हेन यू क्लिक इट विल से हाई, राइट? करेक्ट? यस सर। अच्छा, इसी को यस सर। थोड़ा सा बढ़िया करते हैं। इसमें हम डाल देते हैं प्रोडक्ट डॉट नेम, और हमने एक इनपुट पैरामीटर पास कर दिया, हमने एक पैरामीटर पास कर दिया, करेक्ट? Yes. प्रोडक्ट डॉट नेम। Yes. अब मुझे यहाँ फंक्शन में रिसीव भी करना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ वैल्यू। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? वेरिएबल बनाया मैंने वैल्यू नाम से। इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग टाइप है ये। तो ये स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। और यहाँ मैं दिया हाई, यू हैव selected वैल्यू, राइट? आपने ये सिलेक्ट किया है। प्लस तो कॉन्केटेनेट कर दो। Yes, ही आएगा सर। Yes, ही आएगा। एचटीएमएल में सेव किया।
Click here. See, hi. You have selected T-shirt. Correct? तो ये तुमने क्या अचीव किया? Event binding. Understood? तुम्हें clear है difference between property binding and event binding? Property binding, code behind file से HTML. Right? Event binding, HTML to code behind file. Okay? Team, you understood or not? Yes, sir. Hello, all of you? Yes. Good. Good. So I guess let's break here itself. Okay. So in the next session, I will extend this property binding, and I'll show you how to use array and list, because I need to introduce two more, directive, inbuilt directive, like for loop, if else. So it should not be done today, otherwise you'll all get confused. So let's stick to this point. So can you guys practice it today and send me the screenshot or confirmation that you have done it? You have done the practice till this point? Yes or no? Yes. Can you Yes, practice sir. at your end and send me the screenshot that you have done the same? Yes, sir. Yes. Good. So I Yes, will sir. give you the recording link in next 2 hours max. Okay. But I need by tomorrow morning, I need an assignment from your side. Okay. Doing the same thing. Okay, sir. This is one. This is one. Hold on. This is one. Second thing, you all have created that eShop page. Remember? Yes, Remember? sir. Can you divide the sections into components? Same thing the way you were speaking, an hour ago. That header separate component, banner separate component, deals of the day separate component. Can you push? Can you create that many component? और उन components में अपना वो जो HTML कोड है डाल देना. Can you do that or not? Can you do that or not? Yes, Yes, sir. sir. So there are two assignments that you need to complete. Okay, one, the same what we did. Second is eShop page in Angular. Okay. Okay. So we don't have to हम उसका कोड बिहाइंड मतलब सर टीएस फाइल नहीं लिखनी है, सिर्फ एचटीएमएल कोड ही डालना है ना? हाँ, उसमें अभी TS फाइल में कुछ डायनेमिक नहीं आएगा, बट जस्ट Yes, sir. रिमेंबर ना, अगर तुम डायनेमिक की बात कर रहे हो तो ये जो मेन्यूज हैं, हाँ अभी नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें मैंने अभी तक फॉर लूप कुछ नहीं बताया हुआ. करेक्ट, तुम सिर्फ HTML में Yes. डालोगे. मुझे इतने सारे कंपोनेंट्स ब्रेकअप में चाहिए और हर कंपोनेंट जो है HTML का एक कोड जो है हैंडल कर रहा हो. ओके Okay, sir. टीम, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई मीन, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टास्क? Yes, sir. Yes, sir. We will try. Okay. Sir. No, will not try. You have to do it. Okay. We'll do it. Okay. Hello. Yes. Hello. Yes, go ahead. Go ahead. Your voice is breaking, but it's okay. Go ahead. सर ये जो सेशन बनाने के लिए तो जो बनाए थे वो बूटस्ट्रैप पे ये सब वो भी बनने बोले सर. हाँ, करेक्ट. जो बूटस्ट्रैप पे तुमने, हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली. तुम्हें वो जी. पूरा पेज तुम्हें एंगुलर में बनाना है इन डिफरेंट कंपोनेंट. ये तो सर ये तो आप जो बताए सर आप जो सर बताए तो वो तो लेकिन वो सर बोले सर वो सर हमसे नहीं बना सर. ऐसा अधूरा रह गया सर, वो हमसे बनता ही नहीं है. नूर, तुम बेसिक प्रैक्टिस पहले करो. तुम इस पे जम मत करो, तुम बेसिक प्रैक्टिस करो. बाकी सब लोग ट्राई करो. जो ई शॉप पेज है वो तुम एंगुलर में बनाओ. ओके. ये तो सर ये आप जो बताए सर वो तो बन जाएगा सर. नूर, तुम सुना करो. ट्राई टू हैव एन हैबिट ऑफ लिसनिंग. व्हाट आई एम सेइंग इज, तुम आज वाला जो काम है वो करो पहले, और बाकी सबको कह रहा हूँ कि तुम ई शॉप पेज भी एंगुलर में बनाओ. जितना बनता है बनाओ. ट्राई करो ना. जब तक ट्राई नहीं करोगे कैसे कैसे समझ में आएगा, कैसे होएगा? ट्राई करोगे तो आएगा ना.
यस सर। ट्राई करो फिर उसको नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं ना क्या इशू है, क्या एरर है। लेट्स सी, स्टार्ट तो करो। ओके सर। सर वो हमसे नहीं बना सर, कार्ड वाला सर, कार्ड जो उसमें जो मतलब वो सर हमसे बनता ही नहीं। ठीक है, तुम एंगुलर की प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। यू हैव 2 assignments, okay, 2 assignments. Yes. Bye. Thank you, sir.